Chapter number 14, Chemical Effects of Electric Current. In this chapter, we have seen 14.1, do liquids conduct electricity? In 14.1, we have seen that activity 14.1, in which we have to make a tester and we have to check that whether it is working or not. Now, after that, we have taken a lemon juice in a bottle cap and we have tested that if the electric current is passing through that or not. Okay, on that we have discussed that. Okay, in that lecture we have discussed that uh, the bulb, in that situation the filament of bulb does not get proper heat, and that's why filament does not glow. But we used the led bulb in place of electric bulb. Led bulbs can glow in either a low or more current. Okay, now this table was given in homework. That's table 14.1, that is good or poor conducting liquids. Okay, now we will discuss 14.2, that is chemical effects of electric current. In class 7, we have learned some effects of electric current. Can you list these effects? What does the current produce when it flows through a conducting solution? Let us find out. 14.6. Take out carbon rods carefully from two discarded cells. Clean their metal caps with sandpaper. Wrap copper wires around the metal caps of the carbon rods and join them a battery. We call these two rods electrodes. Now in this activity we have to take out two discarded cells. मतलब जो discarded cells means, now discarded cell means जो सेल है डिस्कार्ड कर दिए हम लोगों ने, उसमें से हमको निकालना है कार्बन रॉड और उसको कॉपर वायर, उसको मेटल कैप और कॉपर वायर जो है ज्वाइन करना है, उसके साथ में एक बैटरी. वी कॉल दिस टू रोड्स इलेक्ट्रोड्स. ये जो टू रोड्स हमने निकाले हैं डिस्कार्डेड सेल में से, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड्स. नाउ यू कैन वॉच द figure here. Here a battery is given and two carbon rods are given. The metal cap, now water in which the carbon. You can see the arrangement in which carbon rod is deep into water. कार्बन रोड, दो कार्बन रोड दिख रहे हैं अपने को, तो जिसके ऊपर मेटल कैप्स लगाए हुए हैं और उसको डीप किया हुआ है इन वाटर. ओके, नाउ pour a cup full of water in a glass or plastic bowl. Add a teaspoon of salt or a few drops of lemon juice to water to make it more conducting. नाउ जो वाटर है उसके अंदर हमको या तो एक टीस्पून सॉल्ट डालना है या फिर कुछ लेमन जूस के ड्रॉप्स डालने हैं. ओके, क्यों डालना है? तो उसको कंडक्टिंग बनाने के लिए. अंडरस्टैंड. नाउ इमर्स द इलेक्ट्रोड्स इन द सॉल्यूशन. मतलब कि जो कोई भी इलेक्ट्रोड्स है उसको इमर्स करना है, उसको डुबाना है अंदर. ओके, नाउ मेक श्योर के इसको डुबाएंगे तो सही, बट नीचे जो है उसको टच नहीं होना चाहिए. जैसे कि फिगर में दिख रहा है हमको, the electrodes are immersed in water but does not touch the vessel or beaker. Okay, now wait for 3-4 minutes carefully. Observe the electrodes carefully. Do you notice any gas bubble near the electrodes? अब जो इलेक्ट्रोड्स है उसको ध्यान से देखोगे तो कुछ गैस बबल्स उसके आसपास देखने को मिलेंगे. now now a scientist in 1800, a British chemist William Nicholson had shown that if electrodes were immersed in water and a current was passed, bubble of oxygen and hydrogen were produced. मतलब कि जब कभी भी इलेक्ट्रोड जो है वाटर में रखेंगे और इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो बबल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बबल्स एंड हाइड्रोजन के बबल प्रोड्यूस होंगे. ऑक्सीजन बबल्स फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड हाइड्रोजन बबल्स
formed on the other electrode. It means that the oxygen is negative, so that's why it is observed on positive terminal, and as well as hydrogen is positive, that's why its bubble is shown on the other negative electrode. The passage of an electric current through a conducting solution causes chemical reactions. मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका जो पैसेज होता है वो कंडक्टिंग सॉल्यूशन के अंदर केमिकल रिएक्शन होने का एक रीजन है. एज अ रिजल्ट बबल्स ऑफ अ गैस मे बी फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन्स. दैट्स व्हाई जो केमिकल रिएक्शंस ऑकर होती है इलेक्ट्रिक करंट पास होने की वजह से, दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रोड्स के आसपास बबल्स फॉर्म होते हैं. ओके, डिपॉजिट्स ऑफ मेटल मे बी सीन ऑन इलेक्ट्रोड्स. मतलब के साथ साथ में अलग अलग डिपॉजिट मेटल भी देखने को मिल सकते हैं. मेटल डिपॉजिट हो सकती है अलग अलग इलेक्ट्रोड के ऊपर, आप देख सकते हो. चेंज ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन में ऑकर. ओके, साथ साथ में ये चेंज भी हो सकता है कि जो कोई भी सॉल्यूशन का कलर है वो भी चेंज हो सकता है. द रिएक्शन वुड डिपेंड ऑन व्हाट सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड आर यूज्ड. These are some of the chemical effects of electric current. आपके ये जो पैराग्राफ में बताया हुआ है उस टाइप के chemical effects of the electric currents can be possible. The first one was bubble of a gas may be formed on electrodes. Deposits of metal may be seen on electrodes. Changes of color of solution may occur. These three or four types of changes may be possible in chemical effects of the electric current. Now, in this, now in activity for figure 14.6, testing potato. Okay, in this you can find out that a potato is taken and two terminals of wires that is inserted in a potato. Okay, now he was surprised with this observation. Now you can see that the observation is given here. When he came back after an hour, he noticed that there was a greenish blue spot on the potato around one wire, whereas there was no such spot around the other wire. Okay, now in that, if you pass a electricity, okay, now they felt that this discovery was very useful because it could be used for identifying the positive terminal of a cell or a battery concealed in a box. They decided to report their finding to Children's Magazine. Okay, now in next that 14.3. In 14.3, you can see the electroplating. What do you mean by electroplating? This lecture we will discuss some of these points. Now, some liquids are good conductor of electricity and some are poor conductors. Now, what do you mean by that? कि कुछ जो liquids होते हैं वो good conductors of electricity हैं. ओके, और सम ऑफ देम मतलब कुछ लोग जो है वो पुअर कंडक्टर्स है. सबसे पहले चीज तो हमको ये पता होनी चाहिए व्हाट इज गुड कंडक्टर्स एंड व्हाट इज पुअर कंडक्टर्स. सो गुड कंडक्टर्स की डेफिनेशन फर्स्ट पेज पे ही थी, दैट इज हियर. Okay, now earlier that the materials which allow electric current